Good morning, students. This is Priyanka Bansal from SKM Public School. Students, today we are going to start new chapter of accountancy that is related to change in profit sharing ratio, or we can say that is related to reconstitution of a partnership firm. So first of all, we will discuss the meaning of a reconstruction. Okay, so any change in agreement of partnership or profit sharing ratio is called reconstitution of the partnership firms. Okay, if there is any change, okay, we know that the partners agree to do business and they make the agreement related to profit sharing ratio. Okay, so if there is any change in the partnership agreement which was made earlier, okay, so that the change will be known as reconstitution of the partnership firm. Okay, so what is reconstitution or reconstruction? If there is any change in agreement of partnership firm, or if there is any change in profit sharing ratio, that will be known as reconstitution. Okay, so in following circumstances a partnership firm may be reconstruction, मतलब changes कब हो सकते हैं? when there will be reconstitution of the partnership firm, that will be in the if there is change in profit sharing ratio, if there is a admission of a new partner, or if there is a death of a old partner. Okay, in these cases there will be change in partnership conditions. Okay, so reconstitution will be done when there is change in profit sharing ratio, when there is admission of a new partner, or if there is death or retirement of a existing partner. Okay, so today we will discuss the first part, when there is change in profit sharing ratio among the existing partner. ठीक है, जो पहले से ही पार्टनर्स है, there is no admission of a partner, no retirement of a partner, but there is a change in profit sharing ratio among the existing partner. Okay, this concept we will discuss today. Okay, so first we will discuss the meaning, what is change in profit sharing ratio. Okay, a change in profit sharing ratio means one or more partners acquire interest from the other partners. Okay, क्या है कि profit and sharing ratio के अंदर क्या है, there will be change in profit sharing ratio. Suppose earlier there was a ratio that was related to 1:1. ठीक है, पहले 1:1 था. ठीक है, but now there is change in profit sharing ratio that they ready to make the share in 1:2. तो अब देखो, it means that one person will sacrifice, then only the other person will gain more. Okay, there will be change in profit sharing ratio. The change can be in one or more partner. Okay, जो रेशो का चेंज हो रहा है वो वन और एक से ज़्यादा पार्टनर्स के अंदर हो सकता है. सो ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स one or more partners acquire interest from the other, or the other partners that sacrifice their share. Okay, so hence it share of profit of one or more partner increases, then share of the one or more partner decreases to the same extent. मतलब जितना देखो earlier they were taking that profit or loss in 1:1. now the partner decided to share in 1:2. तो इस केस के अंदर देखो क्या होगा कि जो इसका पार्टनर का जो इंक्रीज होगा, उसी रेशो के अंदर किसी अनदर पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. ओके, सो बिकॉज द शेयरिंग इज बिटवीन द पार्टनर्स ओनली. सो अगर किसी का पार्टनर का इंटरेस्ट बढ़ेगा, इट मीन्स द अदर पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस देयर इंटरेस्ट, किसी का डिक्रीज भी होगा. सो वेल ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म एग्री टू चेंज देयर प्रॉफिट रेशियो, द रेशियो मे बी चेंज. दिस इज द कंडीशन दैट इफ ऑल द पार्टनर्स आर रेडी, देन ओनली देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, इफ द पार्टनर्स आर हैविंग the objection, then there will be no change in the profit sharing ratio. Okay, so change in profit sharing ratio means that there will be increase or decrease in the profit sharing ratio of the partners. Okay, so what will be the changes? That if there is change in profit sharing ratio, it means there will be new profit sharing ratio. Okay,
if there is change in that profit sharing ratio, it means the earlier ratio will be changed and the old ratio will become the new profit sharing ratio, the ratio in which the partners are to share the profits in future after reconstitution. okay, चेंजेस होने के बाद जिस रेशो के अंदर प्रॉफिट्स को शेयर किया जाएगा डैट इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ओके, गेनिंग रेशो अभी आपको जैसे मीनिंग के अंदर ही बताया था, डैट इफ द शेयर ऑफ ए पार्टनर will increase, okay, it means he is gaining something, and the other partner share will be decrease, it means he is sacrificing something. okay, so gaining ratio means in which the profit sharing ratio ऑफ ए गेनिंग पार्टनर इंक्रीजेज. ठीक है, मतलब जिस पार्टनर का रेशियो इंक्रीज हुआ है इट मीन्स ही इज गेनिंग. ओके, एंड दैट चेंज विल बी दैट नोन एज गेनिंग रेशियो. It is the ratio in which the profit sharing ratio of the gaining partners increases. It is calculated by taking the difference between the new profit ratio minus old profit ratio. How we will calculate new profit ratio minus old ratio? That will be in like this. We will come to know that gaining ratio मतलब कितना उसने गेन किया है. ओके, next is sacrificing ratio. It is the ratio in which the profit sharing रेशो ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डिक्रीजेज, मतलब जिस रेशो के अंदर किसी पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो रहा है डैट इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशो. इन द मीनिंग ओनली आई हैव टोल्ड यू डैट इफ देर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स देर इज नो एडमिशन ऑफ पार्टनर, नो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एंड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इफ द रेशियो इज चेंजिंग इट मीन्स someone will डिक्रीज एंड समवन विल गेन. ठीक है, किसी का शेयर इंक्रीज होगा और किसी का डिक्रीज होगा, इट मीन्स समवन विल गेन एंड समवन विल सेक्रीफाइस. गेनिंग मीन्स person is having more than the earlier ratio, and sacrificing means the partner will have the ratio more than the less than the earlier ratio, मतलब जितना उसको पहले मिल रहा था उससे कम मिलेगा, it means he is sacrificing. And if the partner is getting more than the old ratio, it means he is gaining something. okay, so how it is calculated? It is calculated by the difference between the old profit ratio minus न्यू प्रॉफिट रेशो. ठीक है, अब देखो हमने गेनिंग रेशो को कैसे निकाला था. गेनिंग रेशो के अंदर हमने क्या किया, न्यू प्रॉफिट रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशो, यही किया था. ठीक है, इट मीन्स द रिजल्ट विल कम इन पॉजिटिव. ठीक है, अगर हमने सेक्रीफाइस निकालना है और सेम ही फॉर्मूले से निकालना है डैट न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो एंड द रिजल्ट इज कमिंग इन नेगेटिव, इट मीन्स इट इज sacrificing. okay, and in this how they have told that old profit ratio minus new profit ratio. okay, they have told the formula reverse as gaining ratio, मतलब reverse of the gaining ratio is sacrificing ratio. okay, if the old ratio is positive it means sacrifice, and if old ratio is negative it means gain. ये किस रेशियो के ऊपर है, डोंट कंफ्यूज इन दिस. दिस इज रिलेटेड टू व्हेन वी आर कीपिंग द ओल्ड प्रॉफिट रेशियो फॉरवर्ड. ठीक है, आगे रख रही हैं तब क्या है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स सेक्रीफाइस है, और अगर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स गेन है. व्हेन वी आर कीपिंग द ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दैट अर्लियर टू द न्यू प्रॉफिट रेशियो, एंड इफ वी आर कीपिंग द न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस old profit ratio, it means the plus will show the gaining ratio and the negative will show the सैक्रिफाइसिंग रेशो. ठीक है, तो ये क्या है, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ओल्ड प्रॉफिट रेशो को आगे रख रहे हो इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइसिंग, देन इन दैट केस सैक्रिफाइस विल बी प्लस एंड द गेन विल बी नेगेटिव. एंड इफ यू आर पुटिंग द न्यू प्रॉफिट रेशो अर्लियर टू द ओल्ड प्रॉफिट रेशो इट मीन्स plus will show the gaining ratio and the negative will show the sacrificing ratio. okay,
And accounting treatment of goodwill, how we will do the accounting treatment of goodwill? In case of change in profit sharing ratio, the gaining partner must components the sacrificing partner by paying the proportionate amount of goodwill. वो क्या करेंगे कि the gaining partner will pay, what he will pay, the proportion of the goodwill to the sacrificing partner. ठीक है, तो सो स्टूडेंट्स वी हैव डन ओनली द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. टुमारो वी विल डिस्कस that how there will be change in the accounts and how we will adjust the accounting treatment if there is increase in liabilities, decrease in liabilities, increase in assets, decrease in assets. Okay, so here we will this we will discuss in the next video. This is just the introduction part only, that when there is reconstitution of the partnership firm, we know that the reconstitution of the partnership firm will be done in the three cases: when there is change in profit sharing ratio, second when there is that admission of a new partner, and the third when there is retirement or death of the partner. And first we have started when there is change in profit sharing ratio among the existing partner. Okay, so students, revise this concept, and if you face any problem, you are free to ask. Stay home, stay safe. Thank you.